Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another exciting episode of the Secret Shit podcast. Today I have with me my friend and marketing guru Gagan Arora with me. Gagan also happens to be my senior from IIT Roorkee. Gagan heads the brand and marketing team at Pristyn Care, and he is the mind behind the iconic brands IQOO and Vivo. Gagan co-founded multiple B2C businesses, the iconic Printvenue and the delicious Foodpanda in his earliest stint. So very warm welcome to you, Gagan, and it is a pleasure to host you. Looking forward to learn a lot on the entrepreneurship bit, on the marketing bit, and looking forward to hearing your story. How are you doing today? Good, Vivek. Thanks for inviting me. Really appreciate it. And I can see you're slightly sleepy because we are doing it at 7 a.m. in the morning. Thanks for accommodating that. Looking forward to it. No, it's a pleasure, Gagan. Gagan, इससे पहले कि I'll keep switching between Hindi and English, hoping it's fine. So before we sort of jump into understand your entrepreneurship stint and your marketing stint, आप थोड़ा if you can just tell us a little bit about your early life, how IIT happened to you, that will be great. I think that will give some context for the entire journey, because I think a lot of what we become is sort of seeded and when we are growing up. So that would be Right. great. So, Vivek, just to give you some background about myself, born and brought up in Delhi, Okay. typically Delhi boy. I've seen a lot of Acha. things across various parts of Delhi. So, just to give you an example that, for a marketing guy, it's really, really important how much experiences you can get or collect in your life. So, I started my, I was born in an area called Lawrence Road and Trinagar. Okay. It's really, I'd say, socio-economic index wise, it's slightly towards the lower middle class category. Okay. वहां से शुरू हुआ, वहां पे देखा लोग कैसे खाते पीते देखते हैं, बचपन से इंटरेस्ट है कि लोग करते क्या मेरे आसपास. हाँ. It can be related to their occupation, how do they spend their life, what they watch on TV. It used to be really really fascinating. फिर मम्मी पापा के साथ किसी पार्टी में जाते थे, पार्टी और भी लोअर क्लास एरिया में है या और भी बेटर इनकम एरिया में है, और अगर अल्ट्रा इनकम वाले एरिया में जाते थे तो चीजें लोग क्या क्या अलग कर रहे हैं उसमें शुरू से क्यूरियोसिटी बहुत हाई थी. फिर दिल्ली की गलियों में पले बड़े. फिर थोड़ा टाइम गुजरा, डैड शिफ्टेड टू अ बेटर प्लेस इन दिल्ली कॉल्ड पीतमपुरा, अगेन टुवर्ड्स द नॉर्थ दिल्ली. बट वहां पे चीजें देखा, चीजें कैसे इंप्रूव हुई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे चेंज होता है, कहाँ पे चीजें डिस्पोजेबल इनकम जाती हैं. एक जो बैलेंस होता है ना, एस्पिरेशन और व्हाट यू कॉल इट, नीड एंड वर्सेस वांट, कि वो श्रीनगर में नीड पे ज्यादा फोकस होता था, टुवर्ड्स पीतमपुरी आ गया तो वहां पे वांट पे ज्यादा फोकस होता था. फिर जब कोचिंग की तैयारी करनी शुरू करी आईआईटी के लिए, फिर साउथ दिल्ली के लोगों से मिलना शुरू करा, वहां पे चीजें बिल्कुल ही अलग थी. घर छोटा होगा लेकिन उम्मीदें, जो सपने होंगे और भी बड़े होंगे. एंड द वे दे लिव देयर लाइफ अगेन विद इन साउथ दिल्ली, लाजपत नगर में क्या होता है, जीके में क्या होता है, साकेत में क्या होता है. सो वो चीज आई थिंक आई रिमेम्बर नाउ कि वो हमेशा से इंटरेस्ट था कि लोग डेली बेसिस पे करते हैं क्या अपनी लाइफ में. वहां से फिर फ्रेंड्स मिले, स्कूल में अगेन आई डिड माय स्कूलिंग इन नॉर्थ दिल्ली. वहां पे फ्रेंड्स काफी सही थे, उन्होंने काफी बताया कि चलो आईआईटी में चलते हैं. जस्ट टू गिव माय बैकग्राउंड, माय डैड यू स्टार्टेड हिज करियर एज अ ट्रक ड्राइवर. ओके. सो अगेन अल्टीमेटली अगर कोई बंदा लोअर मिडिल क्लास एरिया में रह रहा है तो प्रोफेशन, हाउस होल्ड प्रोफेशन क्या होगा, वो सब चीजें मैटर करती हैं. एंड ही प्रोग्रेस, he became successful in his business endeavors and that's how growth happened. And I think from my father only I learned कि कुछ करते रहो, कुछ आउटकम मिलता रहेगा, and probably you start compounding your life outcome really really well. And so while working on जब आईआईटी की तैयारी करी, दोस्तों से मिले, तैयारी करना शुरू करा, तो जस्ट टू गिव एग्जांपल, मेरे को आईआईटी के बारे में 11th में जाके पता चला कि आईआईटी में कुछ होता है. आईआईटी ना की कोई चीज है कि इंजीनियरिंग करने के लिए वो बेस्ट कॉलेज है. फिर हमने तैयारी करनी शुरू करी. फिर अगेन आई थिंक आईआईटी की तैयारी में आपको एक चीज समझ आती है कि आपको अपने जैसे लोग ढूंढने हैं जो आपको समझा भी सके, सिखा भी सके, एंड यू हैव टू डू नेटवर्किंग विद देम. इफ यू सी इट क्लियरली, आई थिंक जो आपके हाई ग्रेड और आई से हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीच यू अ लॉट अबाउट नेटवर्किंग. तो वहां से कुछ फ्रेंड्स बने, दे हैव बीन माय फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम नाउ. वहां फिर आईआईटी में एडमिशन हुआ. फिर आईआईटी में फर्स्ट ईयर तो आपको पता ही है मस्ती में निकल जाता है. सेकेंड ईयर में थोड़ा आके लग गया था कि ना, आई थिंक ऑल्दो टेक्नोलॉजी कॉलेज में है, आईआईटी रुड़की में है, बट आई थिंक इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन probably may not work for me in the future. और आप जिस तरह से काम कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि आपके ग्रेड्स क्या हैं. ग्रेड्स और मिड 7.5 हैं, 7.5 हैं.
तो देन आई रियलाइज कि कुछ और करके देखते हैं, एंड विद इन ओके। कॉलेज आपको पता है कि फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, कभी थॉम्सो हो रहा है, कभी कॉग्निजेंस हो रहा है. देन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड सेलिंग टी शर्ट ओके। फॉर द फेस्ट. अच्छा। तो उससे पहले जो टी शर्ट छपती थी वो पूरा जुगाड़ वाला प्रोसेस होता था. कोई कोई कर हम्म। लेगा, इसको देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मुश्किल से 50-100 टी शर्ट बनेंगे, स्टूडेंट्स अपने पास रख लेंगे. बट आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गाय व्हेन आई रीच देयर कि इसके ऊपर स्केल पे काम करते हैं और टी शर्ट्स जो बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी अच्छे से बेचेंगे. हम्म। तो थर्ड ईयर में आई रियलाइज कि मैंने टीम बनाई. आई थिंक 2 जूनियर थे, ओके। और एक अनिक प्रिय था, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक आपके बैच के थे शायद. हाँ हाँ। और एक और था प्लस मेरे बैच के 2-3 लोग. हमने सो आई अरेंज द सीड कैपिटल. कुछ 27-28 ओके। हजार थे. हमने अच्छा। कुछ 50-60 रुपए में 500-600 टी शर्ट छपाई, दिल्ली गए, दिल्ली से माल उठाया, डिजाइन क्रिएट किया, उनको दिया, फिर वापस लाए. अब वो 80 रुपए की टी शर्ट या 60-70 रुपए की टी शर्ट, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के वो 80 रुपए की होगी. इसको 300 रुपए में कैसे बेचे? इट वॉज ओके। easier to sell at 150 बट वेरी डिफिकल्ट टू सेल एट 250-300. तो या अब कोई स्टूडेंट आता था बाहर के कॉलेज का, आता था, यार 300 तो बहुत ज्यादा है, आप इसको 150 में क्यों नहीं दे देते? मैं कहते यार 1 रुपए एक दिन का, इससे अलग तो आप चाय पी लेते हो. तो वाई वाई डू वरी अबाउट 100 रुपए, ये वो तो आप पूरे साल में तो वैसे रिकवर हो जाएगा, यानी कि टी शर्ट आपकी साल भर तो चलेगी. सो हम्म। मोस्ट ऑफ द लॉट एट दैट टाइम वाज सोल्ड अराउंड $250. हम्म। देन आई रियलाइज कि हाउ डू यू कन्वर्स, प्राइसिंग कैसे रखनी है, बेचना कैसे, एंड आई रियली लव द प्रोसेस. एंड आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस की प्रोक्योर करना है, सप्लाई चेन बनानी है, लेके आना है, बट आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस वहां पे समझ आया कि प्राइसिंग, इसको बेचना कैसे, प्रॉब्ली आई दिस इज द पार्ट आई लव द मोस्ट. वो चीज हम्म। थर्ड ईयर में करी, वो चीज फोर्थ ईयर में भी करी. एंड बाय द ओके। फोर्थ ईयर आई वाज क्लियर कि मैं कोर इंजीनियरिंग जॉब में तो नहीं जाऊंगा. ओके। ओके। It has to be either very data led or consulting led, where a lot of negotiation can happen. We have to pitch it to someone who is not ready to accept the solution. And ओके। obviously college में seniors काफी guidance देते हैं कि depending on your interest आपका क्या है. And by the way, by the time it was fourth year मेरे पास 2 choices थे. I think life में ना हमेशा 2 critical choices बहुत आई हैं मेरे. तो उनमें ओके। से एक चॉइस थी कि मैं कनाडा जाके एमएस करूं, मास्टर्स ओके। इन इंजीनियरिंग, वर्सेस यहाँ हम्म। पे जॉब स्टार्ट करते हैं. एंड हम्म। आई थॉट कनाडा बाद में देख लेंगे कैसे होगा, पर अभी जॉब शुरू करते हैं. देन ओके। पहले मैंने डेटा कंसल्टेंसी फर्म शुरू ज्वाइन करी. द नेम वाज एब्सोल्यूट डेटा. हाँ वहां पे हाँ। आई थिंक आई गॉट द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, जहाँ पे बेसिक्स बहुत क्लियर है व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, कि बिजनेस को हम्म। नंबर वाइज कैसे देखना है, एंड विद इन बिजनेस कंज्यूमर को नंबर में कैसे समझना है. कंज्यूमर की ओके। अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपनी चॉइसेस हैं, अपने व्हाट डू यू कॉल इट, कि वो किस तरह एक डिसीजन बनाता है, उसका ओके। प्रॉपर कंज्यूमर रिसर्च कैसे होता है, क्या स्टेजेस होती है. व्हेन इट कम्स टू नंबर, हाउ डू यू एनालाइज एंड इंटरप्रेट दैट. सेम चीजें हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेस है, वो 60% रेवेन्यू लो मार्जिन एरिया से कमाता है, हम्म। वर्सेस 40% रेवेन्यू वो एक हाई मार्जिन एरिया से कमाता है जिसमें ग्रोथ नहीं आ रही है. नाउ हम्म। कंपनी के एफर्ट 60% में डालने हैं, 40% में डालने हैं. यू विल आस्क 100 guys, they will give you mixed answers. 50% या will say 60% पे फोकस करते हैं, 50% will say 40% पे फोकस करते हैं. कुछ तो या। चेंज आएगा. लो मार्जिन को हाई मार्जिन बनाएंगे या स्लो ग्रो वाले को हाई ग्रोथ बनाएंगे. तो हम्म। ये सब चीजें एब्सोल्युटली में बहुत क्लियर हुई. देन ऑब्वियसली साइकिल ओके। चलना शुरू हुआ वहां से कि वन ऑफ माय क्लाइंट वाज एक्सेंचर फॉर एब्सोल्यूट डेटा, एंड ओके। आई न्यू वन पार्टनर एट एक्सेंचर. एंड क्या कहते हैं, उन्होंने फिर वहां पे एक्सेंचर में एक पार्टनर थे, ही वाज रियली इम्प्रेस्ड माय वर्क. देन आफ्टर 1.5 years सेड कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन एक्सेंचर. आई ओके। सेड व्हाई नॉट. So ओके। and then I think this power of building relationship has been really really key for me. तो वहां से गॉट इट। सीनियर्स ने गाइड किया, एब्सोल्यूट डेटा जाओ, एब्सोल्यूट डेटा में एक्सेंचर के पार्टनर ने गाइड किया कि आप एक्सेंचर आ जाओ, फिर एक्सेंचर ज्वाइन करा. एंड आई वर्कड एट एक्सेंचर फॉर ऑलमोस्ट 5 years और 5.5 years एक्चुअली, मोर देन दैट. एंड ओके। वहां पे जर्नी काफी अमेजिंग थी इन टर्म्स ऑफ started with data analytics, moved into digital marketing, then worked for a number of US clients, stayed in US. यूएस में फिर अलग अलग मार्केट्स देखी, सैन फ्रांसिस्को, न्यू जर्सी, पिट्सबर्ग, अटलांटा. एंड एक चीज समझ आई कि कंज्यूमर्स पूरी दुनिया में ना अलग अलग हैं, बट हम्म। कुछ चीजें बहुत क्लियर होती है कि आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए.
and obviously we will go through this and we will understand, but Yeah. कि कुछ की प्रिंसिपल है, once you understand that probably आपको मार्केटिंग में एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉलेज जाके. Mm-hmm. There are Yeah. enough people in companies, corporates who can teach you really, really well. And I Yeah. think Yeah. it is a network effect of people who taught me a lot of the things across these 6 years, 7 years, which really, really helped me in my growth. फिर काफी Got it. नेटवर्क बनाया, काफी चीज सीखी, 5 साल फिर वापस इंडिया आए. इंडिया में आपको पता है कि कंसल्टिंग का काम सबसे बोरिंग है. तो देन आई रियलाइज कि कुछ और करके देखते हैं. एंड Okay. फिर आई थिंक बैक इन 2012 आई डिसाइडेड आई शुड लीव एक्सेंचर एंड डू समथिंग ऑन माय ओन. वहां से मेरी Okay. एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई. Got it. एंड ऑब्वियसली विल So, डिस्कस मोर अबाउट दिस आल्सो. yeah, yeah. So, given कि you started from a very lower middle class background, आज से आपने शुरू किया, तो जो डिसीजन था आपका आईआईटी में जाने का, was it like more driven from कि मतलब कहीं तो मतलब पढ़ लो पहले की नौकरी तो लग जाए? Because अगर I'm just thinking कि आपके पापा he was basically building a business, right? So why don't you pursue that itself कि एक business बनाते हैं than getting into this traditional कि इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मतलब ये कहाँ से आया? सी उसमें ना विवेक, जो एक जैसे मेरे फादर का बिजनेस था, क्योंकि इंडिया में टिपिकली बिजनेस काफी अनसर्टेन होते हैं. उस टाइम ना सीड फंडिंग होती थी, ना राउंड ए राउंड बी राउंड से कुछ तो होता नहीं था. यू हैव टू जनरेट द कैपिटल, यू हैव टू सेव कैपिटल एंड यू हैव टू इन्वेस्ट द कैपिटल बैक इनटू द बिजनेस. इट वाज ऑलवेज हैंड टू माउथ सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इनफैक्ट अगर आपका बिजनेस चल भी रहता है आज की डेट में, एंड जस्ट टू गिव वन अंडरस्टैंडिंग, a Yeah. person who's into a corporate job earning let's say 80 lakh can afford to buy a 40 lakh car. Right? A Yeah. salaried guy in India in a good job can do that. But Yeah. when it comes to a businessman, अगर वो साल के 3 करोड़ भी बना रहा होगा ना, वो 40 लाख की कार कभी नहीं लेगा. Because there is so much uncertainty while doing business in India. And I think these are the habits, which have picked up from my father, that how do you save most of the money and how do you ensure your cash flows are certain. So he told me one thing, if your cash flows are certain, probably you can enjoy your life more. And I think वहां से फिर लोगों से पता चला कि आईआईटी में जाके जॉब अच्छी लगती है, probably life can be better. So वहां से फिर मूड बना लिया था कि डैड वाले बिजनेस में नहीं आना. And obviously, by the way, my dad has been doing the same business for almost 35 years now. So back 20 years back when I reached to IIT, the business was only 8 to 10 years old. And when I joined IIT, and it has been almost 16, 17 years since I passed out, the business is almost 30 years old. So you can say I've missed the bus. Could have done that. But in the hindsight, everything is 10 by 10. No, amazing. मतलब हम लोग सर्विस क्लास से आते हैं, मेरे पेरेंट्स सर्विस क्लास में थे, तो मतलब वी न्यू कि मतलब बिजनेस तो खैर किसी को समझ में आता नहीं है, तो नौकरी करनी है आगे जा करके. सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि why would anybody who's already seeing business being built will move to this side, but makes sense. Thank you so much. तो उसमें, now that you went to IIT, right? IIT में जाकर के you were doing these experiments where you were building this t-shirt business जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे. तो उसको मतलब आगे आपने परस्यू क्यों नहीं किया फिर? मतलब given कि I think you spent that amount of time, you were able to build it, you were able to sell it. So immediately after IIT, why did you pursue it? See, Vivek, जो कॉलेज में किया था, it was good for learning. I think you have done also benzene in the past. I think your t-shirt brand was benzene. Yeah, right? yeah. तो टी-शर्ट वाले बिजनेस आपको पता है कि एक शर्ट आपको कुछ तो यूनिक चाहिए. ये बड़ा कैसे होगा, राइट? फॉर एग्जांपल फॉर आईआईटी मेरे को समझ आ गया कि फेस्ट में तो आपने बेच लिया, बट आप जब फेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो आप किस डिजाइन पे टी-शर्ट बेचोगे, वो डिजाइन कहाँ से आएंगे, वो सब चीजों की क्लैरिटी नहीं थी. एंड देन आई थॉट कि इतना स्केलेबल होगा नहीं होगा. उस टाइम क्वेश्चन थे. बट बाय द वे आई डिड कम बैक टू टी-शर्ट बिजनेस इन द फ्यूचर एट Printvenue. So all the t-shirts we used to print were customized t-shirt, and I think it was a lot of fun. And then when I realized that customized t-shirt should be fun, we launched it at Printvenue, and it was a big success. Be it corporate, students, personal use, everybody was getting their personal design printed at Printvenue. Yeah. Got it. So let's say somebody who is hearing this podcast and is in campus, right? Would you recommend him or her to sort of try a startup while being in college, and why and why not? See, if you're in college and if you want to build a business, go for a business where people around you have less experience than you doing it. कुछ ऐसी चीज, for example, for Mark Zuckerberg, it was Facebook. Social media was nascent.
Other tech companies didn't know how to do social media business, right? So he was the first one to think about it, do it. If you're in college, if you have this kind of idea which hasn't been done before, start right there and then. But if you're thinking to getting into a traditional business, for example, in our case, for example, Printvenue, ऐसा नहीं था Yeah. कि कस्टमाइज बिजनेस पहले नहीं होते थे, बहुत होते थे आपको, लेकिन स्केल पे चीजें बनवानी पड़ती थी. फॉर एग्जांपल आपको Hmm. अपनी कंपनी के लिए टी शर्ट चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, बिजनेस कार्ड चाहिए, एक सर्टेन स्केल होता था, तभी आपको प्रिंटर या कोई जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाला एंटरटेन करता था. बट इंडस्ट्री हमने देखी, हमने समझा कि एक वाला यूजर अगर हम सर्व कर पाए कि उसको एक ही टी शर्ट चाहिए, एक ही पेन ड्राइव कस्टमाइज चाहिए, उसको अगर हम सर्व कर सकते, देन वी आर द राइट गाय. बट ये नॉलेज आफ्टर वर्किंग इन कॉर्पोरेट आई. अगर मुझे कोई नहीं पता Hmm. कॉर्पोरेट वाली जनता है, लोगों की पर्सनलाइज चॉइसेस हैं, तो अगर वो लर्निंग नहीं होती तो मैं कॉलेज में कभी भी वो स्टार्ट नहीं कर सकता था. तो आई थिंक Hmm. फॉर अ ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रेडिशनल एंगल है, यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस. बट अगर वैसा केस नहीं है फॉर दैट इंडस्ट्री, देन स्टार्ट राइट इन कॉलेज. या सो बेसिकली आप जो बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मतलब कुछ तो यूनिक इंसाइट होना चाहिए, कुछ तो अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए, कुछ तो स्पेसिफिक स्किल सेट होना चाहिए जो आपके पास है व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप while being in college, especially if you're into traditional side of the business. Got नहीं, it. ट्रेडिशनल साइड है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप ट्रेडिशनल हाँ. बिजनेस में कुछ कर रहे हो तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको पता है आप क्या करने वाले हो, बिकॉज आपसे बेटर लोग वहां पे बैठे हैं. बट अगर हाँ. कॉलेज में आपको पता है कि वहां पे कोई नहीं और नहीं कर रहा है, एंड यू कैन हाँ. डिस्टर्ब एवरीथिंग और यू कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, देन स्टार्ट राइट अवे. Got it. Got it. Makes sense. Makes sense. And then now, I think given कि वहाँ से निकल के आप सीधे consulting में आ गए थे, right? तो would you sort of recommend consulting as the sort of first job option to, let's say, people who are again in campus? And then what would be, let's say, a few learnings that you had from your consulting experience? Absolutely. I think Steve Jobs said this thing very very clearly, that your future is all about connecting dots from the past. And I think for me it has happened. People who I met Mm-hmm. at some stage of life ended up helping me in the future. And Mm-hmm. similarly, in consulting, I was focusing on two things. In the early phase of career, I was working on consumer tech products, and in the later phase, I was working on healthcare clients. Okay. और जो कंज्यूमर टेक में किया वो मेरे को प्रिंट वेन्यू, फूड पैंडा, iQOO एंड वीवो में काम आया. जो मैंने हेल्थ Yeah. केयर में किया वो मुझे आज प्रिस्टीन केयर में काम आ रहा है. Nice. So somewhere consulting gives you a lot of exposure. And आपको ना एक कंसल्टिंग की ब्यूटी क्या है कि राइट, इफ यू इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, जब आप टेबल पे उस बंदे के साथ बैठते हो जो उस इंडस्ट्री में 15 साल से काम कर रहा है, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ इनसाइट्स टू शेयर, और आपको डेटा और जो दूसरी इंडस्ट्री के ट्रेंड है वो पता है, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो जो लर्निंग होती है, इट इज रियली रियली फास्ट. Yeah. And Yeah. I think Yeah. it has helped me. I think if you're not sure what you want to do in the future, consulting is the best place to start. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Multiple industries, multiple clients, multiple senior exec will get in touch with you. So वो अपने Yeah. आप में एक deadly combination. And I think when you see also, a lot of consultants end up becoming CEO of bigger firms. Mm-hmm. And Mm-hmm. I think the reason has been this network, insights, connection with senior executive at other places, and the learning they have gained from all of these years. Yeah, yeah, yeah. Maybe just to add on to this, right? Consulting happened to me also by accident. I think Nice. one thing which happened for me was what I learned in consulting was कि it gives you the ability to break problem into such small pieces that you can then solve these pieces very, very easily. So that structuring and breaking the problem into pieces is something that it's amazing that you learn in the consulting side. Got it. So now Gagan, now that you had this good job on the consulting side and you were working on the data side, looking all the insights, so what sort of triggered you to now get into entrepreneurship? You started Printvenue, so ये trigger कैसे हुआ यहाँ? So I got married in 2010, and I think my wife has been a catalyst. So we were discussing, we were in US. So again, we were clear that at some point of time we will go back to India, and we don't want to settle in US. Okay. So it was clear we went back. Everything was going as per the plan, but India आके काम बहुत boring हो गया consulting में. And obviously when you work in US, consulting wise, the work is slightly different in terms of things you do. Then I realized कि कुछ तो अलग करते हैं. तब यहाँ पे भी लाइफ में दो choices आई कि should I move back to Singapore? There was an opportunity, and should I stay in India and do something else? Then I discussed with my wife, and
शी सेड इफ अगर कुछ करना तो यहाँ करके देख लो, मतलब व्हाई डोंट यू ट्राई। एंड ऑब्वियसली वो इंक्लिंग होती थी कि मतलब डैड का बिजनेस है तो कुछ खुद भी ट्राई करके देखते हैं। इट वाजंट दैट आई वाज नॉट कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस और समथिंग। तो हम्म। फिर अगेन आई वाज मीटिंग पीपल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन आई गॉट इन टच विद वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एंड ही वाज माय रूममेट, सौरभ। एंड अच्छा। he was trying to establish his business but it wasn't doing well. It was ओके। really, वो शुरू में होता है ना डेड ऑन अराइवल, उस टाइप मोड में था कि हाउ डू अच्छा। वी इंक्रीज इट, स्केल इट। देन ही सेड कि इसको मिलके करते हैं, probably it might ओके। become better। इसको हम्म। if you want to try we can do it together also। तो सौरभ then I सौरभ thought, ऑलरेडी प्रिंट वेन्यू बिल्ड करे थे या कुछ और बिल्ड करे थे उस समय? नहीं, he was trying to build Printvenue but it was just 1 or 2 months if I'm not wrong। And ओके। scale wasn't happening ultimately। Some bit of operations were set up but I think marketing was almost zero, so ओके। nothing was there in terms of what was being done। Very little number of orders being delivered per day basis, so ओके। very very nascent I'll say। uh, ओके। तो फिर वाइफ से डिस्कस किया, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। एंड ऑब्वियसली ओके। इतना डेटा तो नहीं होता था कि डिसीजन सही होगा गलत होगा, बट आई आई वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर प्रिंट वेन्यू। एंड वहां से जॉब अब छोड़ा और लग गया उसमें। ओके। एंड उसको वहां से फिर स्केल करना शुरू, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय जर्नी ऑन ओके। एंटरप्रेन्योरशिप साइड। राइट। Got it. So it was more about कि let's work on something which is exciting uh, than building a startup. It's about कि ये मतलब मजा नहीं आ रहा अभी जो कर रहे हैं, maybe we'll do something which is more interesting. So the inclination is towards what is more interesting than just doing the regular stuff. सी आपको कोई भी एंटरप्रेन्योर मिलेगा आज की डेट में या पहले भी मिलेगा, वो कहेगा ना मैं इसको 1,000 करोड़ का बिजनेस बना दूंगा। Hmm. एंड 99.999% ही इज लाइंग टू हिम। Hmm. बट अगर वो कन्विक्शन नहीं होगा ना तो वो कर भी नहीं पाएगा। Yeah. एंड डे वन पे किसी को नहीं पता होता कि चलेगा या नहीं चलेगा। बस दिस कहते हैं ना वो अनफिल्टर्ड ऑप्टिमिज्म, वहीं से सब चीजें शुरू होती है। एंड आई थिंक Yeah. दैट्स व्हाट द स्पार्क इज। तो Yeah. आई थिंक Yeah. इन माय केस इट हैपेंड एंड आई हैव नोटिस अब तो 10-15 साल हो गए चीजें देखते हुए। Hmm. सब फाउंडर ऑलमोस्ट झूठ ही बोल रहे थे बट दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देमसेल्व्स आल्सो इन द प्रोसेस। Yeah. तो काफी मुश्किल है if you don't have that optimism. It's very difficult to push forward. All these business जो भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ने बनाया नहीं है successfully, and if you're trying to do it, I mean, if you're not optimistic तो हो ही नहीं पाएगा। like बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बनने के लिए बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं don't होगा। even try. So you need तो then optimism, not advice। yeah, तो फिर आप print venue में आए and then you started focusing on the marketing side. So just tell us a bit about Printvenue journey. मतलब आपने शुरू से So finish कैसे किया? Whether did you sort of sell it off to somebody or what happened? Yeah, there. विवेक उसमें Printvenue was almost at zero, तो कुछ भी नहीं था। फिर सब कुछ आके देखा। एंड when you are a founder then you don't go function wise। फिर आप देखते हो कि यार सब कुछ मुझे ही करना है जब तक और लोग नहीं आते। तो सौरभ एंड आई स्टार्ट वर्किंग टुगेदर कि इसको ये चीज ठीक करते हैं, ऑपरेशन में दिक्कत है, ये सप्लायर ठीक से नहीं दे रहा, ये ठीक से प्रिंट नहीं हो रहा, क्वालिटी चेक्स कैसे बनाए, ऑपरेशन फ्लोर कैसे डिजाइन होगा, फिर जो डिलीवरी होगी कौन से पार्टनर के थ्रू होगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 और 12, जहाँ पे Yeah. तब डिलीवरी और ये सब नहीं होते थे। आपको डिलीवरी बहुत ही हैसल वाले तरीके से मैनेज करनी थी। टेक यूज्ड टू बी रियली रियली डिफिकल्ट। इतने स्टैंडर्डाइज Yeah. आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन नहीं होते थे। फिर गेटिंग अ Yeah. सीटीओ ऑन बोर्ड, फिर सीटीओ लाना अपने में चैलेंज था। प्रोडक्ट कौन देखेगा, टेक कौन देखेगा, फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे। सो बहुत चीजें बस अपने आप होती चली जाती हैं। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू पुट टाइम, यू हैव टू। एंड एज आई सेड कंसल्टिंग में जो आपको इशू बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है ना, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। तो Mm-hmm. वो चीजें फेसेस करें। एंड जस्ट टू गिव वन एग्जांपल, वी टुक द बिजनेस फ्रॉम लेट्स से 10,000 रुपए महीने से उसको हम 60 करोड़ तक लेके गए एक Okay. महीने में। Nice. एंड सॉरी साल में, एनुअली। एंड द जर्नी वाज रियली रियली फैसिनेटिंग कि एक कस्टमर आ रहे हैं, देन सडनली वो 2 महीने के लिए गायब हो गए, देन स्टार्ट गिविंग यू ऑर्डर्स अगेन। बिकॉज अल्टीमेटली बैक इन 2014 लोगों को ऑनलाइन पे उतना ट्रस्ट भी नहीं होता था। Mm-hmm. पहले एक बार ऑनलाइन प्रिंट करा के देखा, समझ आया ठीक है, फिर थोड़ी और महंगी आइटम प्रिंट कराएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर दूसरे प्रिंटर ट्राई करके आएंगे, फिर वहां से फिर धोखा खाएंगे, फिर आके यहाँ ऑर्डर देंगे। एंड स्लोली वी स्टार्टेड सर्विंग ऑलमोस्ट आई से more than 100,000 customers a month। Wow. Wow. That's and amazing. and And this was and all through your organic marketing reach. we spent some money on paid marketing also। Okay. बट Mm-hmm. जनरली होता है कि आप रेलेवेंट कितनी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर बंदा बिजनेस कार्ड ही सर्च कर रहा है तो मैं उसको ही दिखाऊंगा।
आई नेवर हैड द लग्जरी कि कोई भी बंदा कुछ भी सर्च करो प्रिंट के लिए. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू इन्वेस्ट मनी प्रॉपर्ली व्हाइल डूइंग मार्केटिंग. इट हैज टू बी रियली रियली रेलेवेंट. एंड या वहां पे भी कुछ कुछ चीज सीखी. जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको कुछ चीजें पता नहीं होती, देन यू रियलाइज कि यार ये तो हमने कुछ अलग हो गया. तो बाय द टाइम इट वाज, पहले 6 महीने तो काम चल ही नहीं रहा था कि हम ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड बेच रहे हैं और कस्टमर आता है, गायब हो जाता है, कुछ नहीं होता. देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार हमारे ना गिफ्टिंग आइटम ज्यादा बिक रहे हैं, प्रिंटिंग आइटम कम बिक रहे हैं. और प्रिंटिंग आइटम तब बिकता है जब पहला बंदा गिफ्टिंग आइटम खरीद चुका था, समझ आ चुका था, फिर वो आगे प्रिंट के लिए आता है. एंड ऑल दिस वाइल वी ओके वर सेलिंग कि भाई तू बिजनेस कार्ड ले ले, बिजनेस कार्ड ले ले, और गिफ्ट की तरफ हम पेड मार्केटिंग कर भी नहीं देते. फिर हमने ओके देखा कि लोग पर्सनलाइज पेन, पर्सनलाइज कार्ड होल्डर, पर्सनलाइज डायरी, अपने नाम लिखा हुआ, एक जो या फीलिंग आती है ना कि एक बंदा जो फ्रीलांसर है या फिर छोटी कंपनी चला रहा है, एक डायरी एक पेन में उसका नाम लिखा हुआ, तो एक वो प्राउड वाली फीलिंग. देन वी स्टार्ट टॉकिंग टू कस्टमर व्हाई यू आर बाइंग दिस. वहां से इंसाइट्स निकले कि ओके कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके लिए क्या वैल्यू से मिल रही है, और उसको क्यूरियस क्यों है. तो इसका ये मॉडल मैंने अपना खुद का बना रखा है कि कुछ भी करना हो तो 3 चीजें जरूर आनी: कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू एंड क्यूरियोसिटी. तो वो चीजें वहां समझी कि अच्छा उसको ये चाहिए, ये चाहिए. फिर हमें रियलाइज यार हमें अपना नाम प्रिंट वेन्यू नहीं, गिफ्ट वेन्यू रखना चाहिए था, क्योंकि 70% धंधा तो वहां से आ रहा है, गिफ्टिंग से. एंड बाय द वे टुडे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज अ ह्यूज बिजनेस, ह्यूज सेगमेंट. या तो या कुछ कुछ लर्निंग समझी, फिर हमने गिफ्टिंग पे फोकस किया. अब जो एक बार आके ऑर्डर कर जाता था गिफ्ट आइटम वगैरह, फिर हम दूसरी बार उसको प्रिंट के लिए वी यूज्ड टू एडवर्टाइज, ये बाकी आप प्रिंटिंग वाला सामान भी रेडी कर लो. एंड दैट्स हाउ द साइकिल स्टार्ट बिकम स्मॉलर एंड फास्टर. कि वो फटाफट आएगा, फटाफट प्रिंट कराएगा, एंड देन नए नए डिजाइन अपलोड करना. देन वी ऑल्सो रियलाइज कि कुछ कुछ, अभी तो आपको मैंने कंज्यूमर साइड वाली लर्निंग बताई. फिर हमने लोग कस्टमर से और बात करी कि आप हमारे से क्यों प्रिंट कराते हो. तो कहते हैं यार कि बाहर जब मैं प्रिंट कराता हूँ ना, तो मेरे को सिंगल कलर और मल्टी कलर में चार्जेस अलग लगते हैं. आप कलर जितने मर्जी हो कार्ड में, आप सेम ही चार्ज करते हो. यार ये तो सोचा ही नहीं हमने कभी कि बाहर वाला. एंड सो इट वाज ट्रायल एंड एरर. वी स्टार्ट लर्निंग फ्यू थिंग्स, बट आई थिंक इट वाज 10x लर्निंग पीरियड. की जो एक दिन में चीजें उसमें सीख रहा था, वो शायद दूसरी जगह में 10 दिन में या कंसल्टिंग में 10 दिन में सीखता. तो साइकिल बिकेम इवन फास्टर. एंड आई थिंक ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई फेल इन लव विद टॉकिंग टू कंज्यूमर्स. काफी जगह क्या होता है कि काफी कंपनीज पे लोग ना आउटसोर्स करते हैं कि यार ये रिसर्च फर्म है, ये कंज्यूमर से बात करेगी, अच्छा ये टेबुलेट करेंगे डेटा और ये हमें भेजेंगे, एंड आई विल सी द डेटा. आई थिंक ये प्रोसेस इज स्क्रूड अप कंप्लीटली. इफ यू आर रनिंग योर स्टार्टअप, डजंट मैटर यू आर डूइंग मार्केटिंग और नॉट, यू हैव टू टॉक टू कस्टमर ऑन डेली बेसिस. अगर आप महीने में 100, 200, 300 कस्टमर से नहीं बात कर रहे हो महीने में, तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली. एंड सारे इंसाइट्स वहीं से निकल गए थे, चाहे प्रिंट वेन्यू हो, चाहे फूड पांडा हो, चाहे आईक्यू हो, चाहे अभी प्रिस्टीन केयर और बीट एक्सपी कर रहे हैं. तो सारे इंसाइट्स वहीं से निकलते हैं. फॉर मी आई थिंक फॉलिंग इन लव in while talking to a consumer is one thing which has really stood out for me. कि कस्टमर से तो बात करनी ही करनी है ऑन रेगुलर बेसिस, की मैं हफ्ते में 4, 5, 6 जितने टकरा जाए वो है. got it. तो इसमें I think I have a standard set of questions in terms of starting up, right? So the first question that I have is कि जब आप 2 लोग शुरू कर रहे होते हैं कंपनी, right? How do you choose a co-founder and how do you sort of distribute your the various activities? क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है, या तो दोनों सेम चीजें करते हैं, या फिर you should sort of divide well right in the beginning as well. वहाँ पे क्या एडवाइस है आपका? आई थिंक जनरली दो या तीन एडवाइस ही मैक्सिमम काम याद रहती है सबको, तो मैं 2 या 3 ही दूंगा. हाँ को फाउंडर वो होना चाहिए जिसको आप फीडबैक दे सको ओके और वो सुन सके. यू हैव टू बी ओपन टू ईच अदर. अगर वो कहीं भी आपको लगता है कि आपको फीडबैक देने में संकोच हो रहा है, यू आर फीलिंग हेजिटेंट, देन यू आर नॉट विद द राइट को फाउंडर. अगर उसको भी यही चीज फील हो रही है तो देन इट्स नॉट वर्किंग आउट. एक ये एब्सोल्युटली एग्री ऑन दिस. दूसरी चीज कि यार एक बार डिसीजन कर लिया, दोनों के दो पॉइंट ऑफ व्यू थी, अब फाइनली चलेगा कि इस एक पॉइंट ऑफ व्यू को कर लेते हैं. पर जब उसको कर लिया ना, तो भले ही दूसरे वाला डिसएग्री करो, बट बोथ हैव टू कमिट टू ईच अदर कि भैया अगर ये है डिसीजन तो हम इसको स्टिक करेंगे, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे. ऐसे नहीं कि अपने बेमन से एक चीज मान ली चलो कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो नहीं करो. तो डिसएग्री बट कमिट, इट्स ओके. एक बार वो निकल गया. अगर आप ये 2 चीजें अपने को फाउंडर के साथ कर सकते हो ना, देन इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन. एंड आई थिंक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी केसेस हैं जहाँ पे को फाउंडर्स हैव रियली जेल टुगेदर. एंड वहां पे कंपनी बहुत बढ़िया चली, एग्जिट बढ़िया मिले, सबके रिटर्न अच्छे हैं, कंज्यूमर हैप्पीनेस इंडेक्स वाज एट द हाईएस्ट. बट जहाँ पे नहीं बनी, वहां पे कंपनी जस्ट गॉट शट डाउन. एंड अल्टीमेटली मेरे को यही समझ में आया कि ये 2 चीजें होती हैं कि मतलब यू कैन फीडबैक फ्रीली, एंड इवन इफ यू डिसएग्री यू कमिट, देन गेम इज सॉर्टेड.
Got it, got it. और print venue के लिए did you raise any funding also? Yes, Rocket was one of the primary investor. Over the course of Okay, time, we raised almost 8 million euros. So okay, Rocket was a Germany-based investor, and then yeah, over the course of 3 years, we raised almost 8 million euros. Obviously in okay, trenches, and okay, we had a couple of telecom partners also from Middle East. One was Ooredoo. They were also invested in Printvenue. okay, okay. So it was quite early, I think. Now also when I speak to entrepreneurs, they say कि अभी इतना evolved नहीं हुआ है VC ecosystem, right? And this is 2012. So how were you able to raise capital at that point of time? Like, what are the few learnings that you had while raising capital then? If you can just sort of slightly talk about it. राइट सो विवेक, एक टाइम ना इंडिया में वो भी था कि कुछ कुछ मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव एग्जांपल कि आपको पता होना चाहिए अगर आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, हिस्टोरिकली कॉम्पिटिटिव है, वहां पे सेट बेंचमार्क्स हैं, उसको आप किस तरह करोगे। तो वो चीजें पता होती है ना, तो आप अगर वो चीजें इन्वेस्टर को बता पाओ, कन्विंस कर पाओ कि यस दीज आर द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म, दैट्स हाउ वी आर ऑपरेटिंग, एंड व्हेन वी आर ऑपरेटिंग वी आर डूइंग बेटर देन द इंडस्ट्री, इन्वेस्टर विल लर्न टू यू, सॉरी हियर टू यू। Okay. तो वो सब Okay. चीजें हो तो इन्वेस्टर को समझ आता है। ऐसा नहीं इन्वेस्टर को प्रिंटिंग के बारे में पता है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर को फूड डिलीवरी के बारे में पता है, बट वंस दे अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द बिजनेस, obviously if there are global player who are doing this at scale is also a good reference point, but if you're doing in your own geography and you can say मैं इतना कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, and I'm better than others or I'm better than the industry average, investor will listen to you, and obviously they are in the market to make returns out of their investment, right? And if they like the concept, if they like the team, they just bet on it, because ultimately startup के early phase में numbers इतने खास नहीं होते, बहुत ही हाँ. limited data set होता है, so they believe the team is right, and if the aim is bigger, they will invest. And obviously success वैसे होता है कि आप 25 लोगों से मिलोगे, 100 लोगों से मिलोगे, एक या दो on board आएंगे, and which is part of the process. Not everybody is interested in you, and you are not interested in everybody coming on board. So So that's how the you process works. you went around sort of pitching all institutional and investors at that point of time. 25-30 Yes, लोगों को तो pitch yes. किया ही होगा आपने. Okay, got it. मतलब काफी लोगों को पिच किया था, कई बार तो पूरे रोड शो लगा देते कि चलो एक दिन में 6 बार पिच करना है, एंड आखिर अच्छा. तक आते आते याद हो जाता था कि हाँ बस दैट्स कि प्रिंट वैल्यू की टैग लाइंस क्या हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल्स हैं, क्या हमारे सब कुछ चीजें दिल से रटी हुई होती थी। Got it. तो Got it. एंड यू जस्ट लव द प्रोसेस। So then, how did the transition happen from from Printvenue to Foodpanda? So I'll tell you, see, when we were scaling Printvenue, there was one question that, ultimately I was, let's say, touching lives of, let's say, 90,000 customers or 100,000 customers at max a month. Mm-hmm. I can take this number, and ultimately for me, by the time it was 2014, it was pretty clear that, I was getting more inclined towards marketing side of things. Yeah, मेरे को इसको scale करना है. And then जब फूड पांडा में ये समझ आया कि this business can touch millions lives almost on daily basis. Mm-hmm. I think this is what excited me the most. And given that I always was in touch with the investor, they loved both of the companies, but they said when it comes to and see, for investor, all of the investments are like children, Yeah. but even investors love some children more than the others. And I've been Okay. okay about it, right? They love Foodpanda more than Printvenue when it comes to Printvenue. By the way, Printvenue was CM3 positive business. Okay. So Okay. it used to recover its operating expenses, delivery, marketing costs, everything except the salary of the team. Everything used to be recovered from the business. That's why we used to call it CM3 positive. In case of Mm-hmm. Foodpanda, it was not CM3 positive, but the scale and impact was huge. That Mm-hmm. this business in future can become one of those businesses where you are touching millions of lives. Obviously, at that time also Foodpanda was kind of small, but the potential or the prospect was really good. And when one of the investors asked, why don't you join Foodpanda and take over marketing? Uh, would you like it? I gave it a thought. Again, talk to my wife. She has been my guiding light during the process, and she said कि impact wise देखोगे तो वो वहाँ पे जा रहा है कि अल्टीमेटली पता है कि एंड दैट टाइम बाय द वे उस टाइम ये भी पता था कि उस टाइम रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड लाने में बड़ी दिक्कत होती थी। आजकल Mm-hmm. तो रेस्टोरेंट Yeah. खुलता है इसलिए कि मुझे स्विगी और जोमेटो में लिस्ट होना है, बट दैट टाइम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उनको ये नहीं सोचा कि लोग मुझे फोन करके क्यों नहीं ऑर्डर देंगे, व्हाई डू यू हैव टू गेट लिस्टेड,
तो ये वो सारे टाइम Yeah. यूज कर रहा हूँ. सो देयर वर Yeah. डाउट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, बट ऑब्वियसली डाउट साइड में रखा, इसको देखते हैं, इसको स्केल करते हैं, एंड Mm-hmm. दैट्स हाउ आई मेड द ट्रांजिशन. एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, नेटवर्क हैज बीन द की फॉर मी थ्रू आउट माई जर्नी. जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इस रोल को मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सारे डाउट साइड करके चलो फूड पांडा ज्वाइन करते हैं, फूड पांडा को स्केल करते हैं, एंड दैट्स हाउ द जर्नी एट फूड Okay. पांडा स्टार्टेड. So Printvenue ko you handed over to like I mean both of you handed over to. See, there were other very capable team members who were ready to, take the command at the firm, and obviously there was this management. We handed over the reign to the new guy, and then Got it. Foodpanda. Got it. Understood. So for now that you are in Foodpanda, right? And so can you just talk a little bit about the journey itself, about Foodpanda? From where did you start? And I Right. think in your entire stint there, I think 3-4. How many years you were at Foodpanda? I was at Foodpanda for almost 2.5-3 years, if I'm not wrong. Yeah, 2.5-3 years. So how was the Right. journey in the 2.5-3 years? If you can just talk a little bit about. So I think Foodpanda raised almost $100 million throughout its journey, and we had almost we went from like 1,000 restaurant to almost 20,000 restaurants on the platform, and we scaled our business from, let's say, few hundreds orders a day to almost 50,000, 70-80,000 orders a day. That's how the scale we did. And इस जर्नी में एक चीज समझ आया कि मेट्रो में क्रिएटिंग अवेयरनेस इजी. फॉर एग्जाम्पल, इंसाइट ये थी कि अगर मैं बैंगलोर जाऊंगा, मैं बैंगलोर के कस्टमर से बात करूंगा, उसको लंच तो कैफेटेरिया में मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट वो किसी तरह मैनेज कर लेगा कि जब वो ऑफिस एंटर करने वाला है उससे पहले उसने ब्रेकफास्ट खा लिया, लंच वो ऑफिस में कर लेगा, डिनर में क्या करना है, राइट? और किसी ने अगर Yeah. कैफेटेरिया में अच्छा नहीं बना तो मैं उसको वहां वो कैसे अपना खाने का मैनेज करेगा. सो दे यूज्ड टू बी चैलेंजेस. और जो अगर आसपास के ऑर्डर करने वाले होते थे, देयर वाज नो स्टैंडर्ड प्रोसेस कि वो कैसे डिलीवर होगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा. तो वो चीज बहुत क्लियरली निकल के आ रही थी कि मतलब देयर हैज टू बी अनटीन ऑप्शंस कि अगर मेरे पास एक एरिया है, अगर ये 5 किलोमीटर का है, मेरे पास कम से कम 200 रेस्टोरेंट तो उस एरिया में होने चाहिए जो वहां पे कस्टमर को डिलीवर कर सके. और बाय द वे, एक कस्टमर जो होता है वो 60-70% टाइम अपने फेवरेट 3 या 4 रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता है, राइट? 5वें, 6वें, 7वें की तरफ वो कभी जाएगा नहीं. तो उसकी डिस्कवरी प्रोसेस बहुत लिमिटेड है. उसको पता नहीं चलेगा उसके एरिया में नया रेस्टोरेंट खुल गया, उसे जरूरत भी नहीं लगेगी. So how do we create need? So this is one of those businesses where the need was not defined right at the first place. It looked like a want. Today it is a need, by the way. Yeah, I need to have this app, food delivery app, right? Yes. But that time you had to develop it. कि यार ये चीजें आपको ये बेटर करेगी. Probably you can make better choices also, right? अगर आपको इंडिया में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आप एक ब्रांड से भी खरीद सकते हो, बट यू विल फील बेटर अगर मेरे पास 20, 25, 30 चॉइसेस हैं, राइट? How do we create this democracy while ordering food? So Foodpanda उस इंटेंट में एटलीस्ट we were very right की इंसाइट थी कि ये बंदा को खाने की दिक्कत तो है, अभी उसको लग रहा है डिस्कवरी वाला इशू नहीं, पर ये है. Then we reaching out to रेस्टोरेंट बहुत मना करते थे, यार ये नहीं, ऐसे नहीं, कमीशन कैसे सेट करोगे, कैश वाले ऑर्डर पर मुझे कमीशन मैं ले लूंगा, मैं आपको क्यों दूंगा, या फिर ऑनलाइन आएगा तो उसका आप मुझे कर दोगे नहीं दोगे. तो उसमें हेसल्स बहुत थे. बट देन वी टुक द B2C राउट कि हमें मार्केटिंग करनी है, हमें कस्टमर को रीच आउट करना है, हमें दिखाना है हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने रेस्टोरेंट्स हैं एंड दे शुड स्टार्ट ऑर्डरिंग. एंड ऑब्वियसली द रेस्टोरेंट्स व्हिच केम ऑन बोर्डेड अर्ली ऑन ड्यूरिंग दिस जर्नी, दे बेनिफिटेड द मोस्ट. And ultimately these were the orders they were missing out on from these consumers earlier, or they were not able to serve them better because their delivery was not that great, right? So Foodpanda removed this friction from the process while ordering. तो ये कॉन्सेप्ट समझाना. बाय द वे, ये प्रोसेस के ऊपर कम्युनिकेशन क्या होगा, राइट? तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आप रात को खाना नहीं ऑर्डर कर पा रहे, आपको चॉइसेस नहीं मिल रही, या 7 11 की लंच अगर बेकार है कैफेटेरिया में तो क्या करूंगा, वैल्यू क्या होगी? आपको खाना उसी रेस्टोरेंट से मिलेगा विद सेम डिलीवरी फी व्हिच वाज चार्ज अर्लियर, और इट वाज नॉट चार्ज, इट विल अगेन एट द सेम प्राइस. अगर आप वहां बैठ के खाते वर्सेस आपको डिलीवर हुआ सेम प्राइस पे. आजकल फूड डिलीवरी की कॉस्ट ऐड होने लग गई है, बट उस टाइम पे हम नहीं करते थे. It was used to be part of the margin itself. तीसरा होता था क्यूरियोसिटी कि इतने सारे रेस्टोरेंट एटलीस्ट मैं चेक तो करूं कि कौन सा है जो मेरे से मिस हो रहा है जिसकी रेटिंग हाई है. तो
context, value, curiosity. I think when we started communicating with our consumer, TV ads गए, हमने activation campaign करने शुरू करे, consumer से reach out करना शुरू करा, we got a tremendous response. I think within Mm-hmm. few months we reached from, let's say, few hundred orders a day to almost serving more than 100,000 orders a day in a short span Wow. of time. And the Okay. scale was huge. And obviously, पहले competition नहीं था, फिर और competition आना शुरू हुआ, फिर Zomato, Swiggy, and these तो आप competitions जब start coming. आप जब फूड पांडा रन करे थे उस समय स्विगी जोमेटो वहाँ पे था Swiggy, यू Swiggy स्टार्टेड नहीं, फ्रॉम दिल्ली Zomato, Swiggy सब बाद में शुरू हुए थे. अच्छा ओके इट वाज मच So, बिफोर देम ओके by the way, there were few players earlier also, which were even there even before Zomato and Swiggy, by the way. ओके So ओके right, but again, it's an execution game also, that how much money do you have in the bank, how much how's your product in terms of experience, consumer feedback क्या है, तीसरा आपके number of restaurants क्या हैं. So there are a lot of multiple factors. It is not just marketing or communication, but how do you run the entire ship is going to decide that how long you can last in the business. And या Foodpanda gave me immense learning on this part, that how to get every aspect right. और जब फूड पांडा जब आप स्केल कर रहे थे तो यू स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से वन सिटी एंड देन यू एक्सपैंडेड इनटू मल्टीपल सिटीज लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल डेज व्हिच इज द सिटी दैट यू आर पायलटिंग इन So we started our pilot from Delhi and Bangalore together. अच्छा But दिल्ली एंड most बैंगलोर टुगेदर right, but most of the firms start from Bangalore alone. या But in our या case, we start from two cities together. okay and then you would have expanded Obviously, see, once your playbook is defined, you can take the almost same playbook to every city, right? For example, you are one person who's going to move from Delhi to Bangalore for a job, right? yeah And then your job is changed from, let's say, Bangalore to Hyderabad. You are the same guy, Mhm. same consumer, right? yeah So the yeah playbook is more or less standardized, at least on the got consumer it side. Your playbook changes a bit on the restaurant side and the delivery side, because delivery guys, mostly if you see on the road, they are local guys mostly. So how do you talk to them? How do you get them onboarded? That playbook is localized, but marketing as a playbook was more or less localized as compared to these concepts. Got it. तो यहाँ से फिर I think Food Panda was showing you this big scale and there was like a lot of scale just still there to be tapped into. So how did you transition from there to, I think then you moved to, I think Sheel, right? If Chain. I'm It's pronouncing called it Chain. right? Right. Yeah, Sheel. Chain. It's You called Chain. moved there, yeah. So how did you sort of go about that transition? What was the So I decision think making process so. like? Vivek, I remember towards the end of 2017, we realized that it's gonna take a lot more money to run the business. Mm-hmm. And see, if you see food delivery businesses, they are barely CM1 positive, barely. When I say CM1 positive, is that you are just able to recover the cost of the food you're delivering and paying your rider. Your marketing costs, your salaries, your rents, every other expenses is not being, nobody's able to recover right now. Yeah. So I would be really surprised if it's even CM2 positive. My guess is that all the delivery business are just CM1 positive. So what happens is that your monthly cash burns are huge, and this is where the challenge comes in. If you have three players in the market or four players in the market, how you are going to make the money? And this is where we realized that other competition had better access to the capital also. I'll also admit that their product was also better, product experience, both things were better also. Then we said, rather investing more and money in the business, should we go for somebody who can acquire this business and give return to our investors and make the exit possible for the entire team? And when we started talking to our within the ecosystem, we reached out to multiple partners. Then obviously when the conversation finally turned out, we found Ola was the best company to acquire us and give us the exit what we were looking for. And in January 2018, if I'm not wrong, the acquisition by Ola happened, and I chose to exit. That there was nothing much more to done, and I think the job was done from that point of time. That team was getting an exit, and everybody's happy, and that Ola by any standard was one of the biggest startup the country has ever seen. So it was a good home for Foodpanda to be there. And वहाँ पे Jan 2018 में जाके क्लियर हो गया था कि आई एम वेरी क्लियर दैट कि फंक्शनली आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मार्केटिंग. आप ऑपरेशन कर चुके हो, सप्लाई चेन कर चुके हो, मल्टीपल चीजें कर चुके हो, बट आई थिंक मार्केटिंग एज अ फंक्शन एक्साइटेड मी द मोस्ट.
कहीं कहीं फॉन्ट होते हैं जिनको Got it. एचआर बहुत पसंद आता है, तो हर एक की अपनी अपनी, आप जैसे होता है ना, हर फाउंडर के मल्टीपल फंक्शंस हैं, बट एक फंक्शन उसे सबसे Yes. प्यारा होगा. सो फॉर मी Yeah. Yeah. दैट हैज बीन द मार्केटिंग. एंड एक जो थी वो एक चीज की ना, थ्रू आउट दीज लास्ट 7 or 8 years, बाय द टाइम एक्विजिशन ऑफ फूड पैंडा हैपेंड, इज कि मैंने कभी भी ना एजेंसी साइड पे काम नहीं किया था कि Okay. टीवी एड्स जाते हैं तो क्रिएटिव टीम कैसे बैठ के बनाती है, क्या उनका प्रोसेस होता है, बड़ी ब्रांड्स होते हैं वो कैसे स्केल करते हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी नॉलेज है, इधर इट वाज थ्रू कंसल्टिंग और व्हाट आई वाज टॉकिंग टू अदर पीपल, बट आई हैव नेवर सीन इट फॉर्मली, हैड नेवर सीन इट फॉर्मली. एंड बाय द वे, नो एमबीए कॉलेज कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ इनसाइट आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली जब तो आप ऑफिस जाके काम नहीं करोगे, लोगों से सीखोगे नहीं, क्या होगा. Yeah. Yeah. एंड अगेन द डॉट्स कनेक्टेड हियर कि चेल ने फूड पांडा का पहला टीवी एड बनाया था. Okay. Okay. So he's and I was talking to one of the senior person at Chail that कि यार अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग, उसने कहा कि एक बार आके देखो, सीखो, समझ आया तो देखते हैं कैसे करना है. मैंने ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं. Then when I joined Chail and I became part of Samsung e-commerce business, in a sense कि Mm-hmm. by the way, Chail is entirely owned by Samsung. So Samsung Okay. की all the Yeah. marketing you see, it is being done by Chail. It's a Samsung company. Yeah. Uh, Yeah. and you have to understand, even Samsung has this thought process that you have to give creativity to the agency, and if you're doing it ourselves, it has to be a separate company. We can't do it within Mm-hmm. Samsung because Samsung works very differently, and for agency it has to work. It has to be very very creative led. So Chail Hmm. अपने आप में अलग agency, and Chail is, I think if I'm not wrong, world's 10th largest creative agency, Okay. and then Okay. they do work exclusively for Samsung. तो वहां पे अगले 1-1.5 साल वो सारा ब्रांड बिल्डिंग वाला प्रोसेस जो फॉर्मली होता है एट स्केल, आई सॉ इट अगेन, इमेंस लर्निंग एट स्केल, कि फोन बेचना है, किसको बेचना है, कौन सा कस्टमर है, उसकी क्या नीड है, क्या वांट है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज लुकिंग फॉर, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ इमेज ही वांट्स टू प्रोजेक्ट. आपका फोन आपकी आइडेंटिटी है, बाय द वे. समबडी हु इज कैरिंग, लेट्स से आप साल का 1 करोड़ कमा रहे हो, 80 लाख कमा रहे हो, और रात में 15,000 का फोन लेके घूम रहे हो, तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. So Yeah. how do you use status Mm-hmm. as a key ingredient for your campaign? Again, वो सब चीजें समझना कि बंदा क्या चाहता है, तो वो बहुत सही थी वहां पर लर्निंग. तो अगले 1.5 साल मैंने चेल में रह के देखा कि चीजें, while what it takes to build brand at scale, and again and again. Samsung is a big brand, everybody knows that, but every campaign comes, they give in their 100% or rather 200%. We have to make it a success. तो वो कैसे Yeah. करना, Yeah. आई थिंक इट वाज अ पीरियड ऑफ इमेंस लर्निंग फॉर नेक्स्ट 18 months. Got it. Got it. So I think so quite interesting, right? So entrepreneurship gives you this insight that you are inclined towards marketing. So basically, by doing so many things, you basically realize कि इसमें मजा आता है मुझे, and then you join this. Now when you're looking at, like, there are various buckets within marketing itself, right? There is your performance marketing, there is brand marketing, right? So if you can just talk about these buckets, and then within these buckets, which is where you had like the maximum inclination, maximum interest? See, Vivek, both are required. It is not about inclination. And I think Shale was, while working with Samsung, I got this picture about performance and brand very clearly. Okay. मैं आपको जितनी मर्जी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लूं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये फोन सस्ता है, आप ये वाला फोन ले लो. अगर आपने आईफोन लेना, आप आईफोन लोगे, आपने सैमसंग लेना, आप सैमसंग लोगे. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सस्ता है, आप ये ले लो. तो Gagan, maybe somebody who's hearing this and might not know what performance or brand marketing is. Okay. अगर आप थोड़ा सा explain कर दें उसको. Yeah. Right. So friends, there are more or less broad 2 ways of doing marketing. Performance marketing ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल गूगल पे गए, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, और आपने कहा कि कॉटन सॉक्स, आपने सर्च करी कॉटन सॉक्स, चीप कॉटन सॉक्स बाय ऑनलाइन. मैंने वहां जाके अपनी ब्रांड की एड दिखा दी, बाय XYZ कॉटन सॉक्स एट दिस प्राइस स्टार्टिंग 199. तो आपको अच्छा ये एड आ रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ. क्लिक किया, देखा, मेरे को पसंद आई, मैंने खरीद लिया. आपके दिमाग में कोई खास स्पेसिफिक ब्रांड नहीं था, बस आप एक चीज ढूंढ रहे थे, वहां पे सडनली आपको मेरे ब्रांड की एड दिखी, आपने क्लिक करी और आके मुझसे सामान खरीद लिया. मेरा ब्रांड आपको इतना कोई खास पता नहीं था. तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पार्ट हो गया. आई कैप्चर्ड यू राइट देयर एंड देन. अगर आप उस टाइम एडिडास ब्रांड सॉक्स ढूंढ रहे होते कि एडिडास कॉटन सॉक्स, और मैं जाके अपनी एड दिखाता, तो एक एड एडिडास की आ रही है और एक मेरी आ रही है, तो मोर और लेस इफ यू आर वेरी वेरी ब्रांड इंक्लाइंड, तो आप एडिडास की एड पे क्लिक करते और वो देखते, समझ आता.
तो आप मेरी ऐड करते हैं। आपका एक क्राइटेरिया होता है कि यार शायद सस्ती मिल रही है तो मैं आपकी ब्रांड के लिए लूं, पर मेरी चॉइस एडिडास है तो मोस्ट लाइकली मैं एडिडास पे ही जाऊंगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ ब्रांड मार्केटिंग। दोनों बंदे गूगल से आए, बट एक जगह ब्रांड की अवेयरनेस ज्यादा थी, कंसिडरेशन ज्यादा थी, तो आपने वो कर लिया। हम्म। एक जगह खाली प्रोडक्ट की अवेयरनेस थी, ये चाहिए, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग थ्रू ले लिया। तो गॉट इट, गॉट द वे आई डिफाइन इट इज की अ कंज्यूमर इज लाइक अ फिश इन अ पॉन्ड। इट। या। अब राइट, अब जहाँ पे फिश कम है और फिशरमैन ज्यादा है तो नेट्स बहुत ज्यादा है, तो या। वहां पे कंपटीशन बहुत होगा, हम्म। राइट। और जिसका नेट स्ट्रांग होगा, बड़ा होगा, वो नेट आपका ब्रांड है, उससे आप उसे हम्म। कैप्चर कर लेंगे। और उस नेट के जितने जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, वो जितने छोटे होंगे, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कि एक बार अंदर आ गया तो निकलने नहीं देंगे। सो आई ऑलवेज कंप्राइज दिस कि अ कंज्यूमर इज लाइक अ फिश, brands are like fishermen. The wider the net is the brand consideration and awareness. Stronger the pores of the nets is performance marketing. And this is how गॉट you इट। create the entire analogy. That key, and for example, there are certain categories जहाँ पे brand का रोल बहुत ज्यादा होता है। I give example of phone. आपको मैं जितना मर्जी कर लूँ, आपने आईफोन लेना, आपने आईफोन लेना, आपने सैमसंग लेना, आपने सैमसंग लेना है, तो फर्क नहीं पड़ता या, कितनी या। मर्जी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, आपने शुरू से अगर ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करा, your phone will not sell for sure, right? Then या, there are या। certain categories like socks, t-shirts. People are not that really brand awareness also. Sorry, not brand conscious also. वहाँ पे आपका performance market से निकलता है. That's why you see every now and then you will see Soul Store, Bewakoof.com. You know, they are able to make the entry. या, क्योंकि या। ब्रांड का प्ले है, लेकिन इतना भी नहीं कि नया बंदा ना आ पाए। जबकि when it comes to smartphones, the brand play is so strong that not not everybody can enter. The bar is really really high to enter smartphone market, and this is where IQ became a learning experience. That's when I realized ki why brand is needed on day one. There are few categories where you can't survive without creating a brand. तो या, ये या। चीज वहां से निकली थी, and then this is where गॉट इट। I was just about to finish So this, that कि yeah, हाँ। performance marketing is good to know. You can do that. But if you're not investing in brand, then you will lose out to somebody who's better than you at doing the things you are doing right now. Yeah. Got it. No, I was about to ask the same thing. We were talking about performance and brand, which one to choose. But you basically said कि दोनों चीजें समझने की जरूरत है. And then it's a very good example. Thank you so much. वो मछली वाला example तो बहुत ही सही है. तो got it. So I think we were talking about this, right? I think one of the key thing, and you have been talking about right from the beginning in marketing, is you understand the customer really well, right? तो जब कस्टमर को समझना होता है, when you want to understand the customer before you start marketing them, right? So what's your process like? How do you go about understanding, let's say if you're, maybe we can just pick it up later, but right now let's say if you can just talk about your process of understanding your customer, and which you would have tried, let's say in Printvenue, you would have tried in Foodpanda, you would have tried in IQOO, Vivo. What's the process like? And now right now in Pristyn Care as well, Right. So Vivek, ये process अपने में एक science है, right? I think probably our conversation might be again, it's probably going to be like 45-50 minutes conversation. So I'm going to give the entire overview, but to keep it simple, I give you there are two steps. One is focus group discussion, where you can talk to consumer, you understand his lifestyle, what he does, basically कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स क्या है, घर में क्या क्या इक्विपमेंट्स है, लेट्स से माइक्रोवेव है नहीं है, या रेफ्रिजरेटर है नहीं है, गाड़ी कौन सी है, बाइक कौन सी चलाते हो, ऑक्यूपेशन क्या है, आप लाइफ की तरफ आपका आउटलुक क्या है, एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स वेरियस थिंग्स, कि then you understand the psyche of all the consumer. आप मार्केट में जाके मिलते हो कि यार मैं 100 लोगों से मिला, मुझे ये 5 मेजर सेगमेंट समझ आए, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप कंसल्टिंग में हो, मैं मार्केटिंग प्रोफेशन में हूँ, ऐसे बंदे करके आप 6-7 तरह के पर्सोना बनाते हो, राइट? अब आपको डिसाइड करना है कि इन 6-7 में से कौन से पहले 2 या 1 या 2 पर्सोना जिसको आप टारगेट करोगे, राइट? मेरे को आज फूड पांडा खोलना है, राइट? मैंने 100 लोगों से बात करी, मेरे को समझ आया, मेरे को अल्टीमेटली मैंने डिसाइड करा कि मेरे को तो आईटी एम्प्लॉयज को बेचना है, कि जहाँ पे मुझे ढेर सारे लोग भी मिले और जिनको टेक यूज करना आता है। अगर मैं वही कोशिश कर रहा था एक मार्केटिंग प्रोफेशनल को या फिर एड एग्जीक्यूटिव को कि भैया आप मेरी ऐप से ऑर्डर कर लो, डे 1 पे वो नहीं करता, वो ऐप इंस्टॉल करना ही नहीं चाहता, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर। वहां पे जनता ज्यादा रिसेप्टिव है टुवर्ड्स न्यू कॉन्सेप्ट, सो वो पर्सोना बहुत क्लियर निकल के आते हैं।
फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव सर्वे, राइट? जब आप क्वालिटेटिव से पर्सोनास फिक्स कर लेते हो ना, फिर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपको स्केल पे चाहिए होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आप किस प्राइस पॉइंट पे कंफर्टेबल होगे? आपने 10 लोगों से बोला, उसने किसी ने 500 बोल दिया, किसी ने 250, सॉरी, किसी ने 20 रुपए बोल दिया, किसी ने 40 रुपए बोल दिया, किसी ने 25 बोल दिया, राइट? बट 15-20 लोगों से बात करने से वो निकलेगा। मैंने अब मेरे को क्वांटिटेटिव सर्वे करना है कि अब मैं लोगों को भेजूंगा एट बल्क कि मुझे बताओ, मैं सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, और मैं कम से कम नहीं तो 500,000 लोगों से पूछूंगा। तो फोकस ग्रुप, लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंसेस, उनसे बात करना, समझना, प्रॉब्ली 1-1 घंटे की कॉन्वर्सेशन करना, सारे एस्पेक्ट समझना, उनके साइकोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक चीजें, और एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट हाउ मच प्राइसिंग पावर दे हैव, एंड देन गोइंग टुवर्ड्स अ क्वांटिटेटिव साइड, आस्किंग क्वेश्चन एट स्केल कि मेरे को पता है मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, अब इसके आंसर मेरे को कम से कम 1,500 रिस्पॉन्डेंट से चाहिए, तो उनको सर्वे भेजना। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दीज आर 2 स्टेप टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। बाकी इसके नीचे Got it. बहुत सारी चीजें होती हैं, सेगमेंटेशन, कोटाज एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें अगेन एज यू गो डीपर यू विल लर्न। Yeah. Maybe at a high level, trying to sort of decode it for people listening to this, right? So, जो क्वालिटेटिव साइड में कह रहे थे हम, तो एक तो बेसिकली वो सोशियो इकोनॉमिक हो गया, राइट? कि मनी वाइज वेयर यू आर प्लेस्ड इन द सोसाइटी, कितने पैसे हैं, अप्लायंसेस एंड ऑल, राइट? तो आई घर थिंक में कौन वो कौन है, फिगर, हाउस होल्ड इनकम, वो सब चीजें। या तो दैट इज वन पार्ट। द सेकंड पार्ट विच इज साइकी, विच इज उसमें अगर थोड़ा सा अगर आप बता पाए कि साइकी कैसे समझें, लाइक व्हाट आर द 2-3 things, let's say an early stage entrepreneur listening to this would want to, is launching something, right? And they want to understand कि consumer का psyche समझना है मुझे, क्योंकि ये तो let's say I've been broadly, मुझे समझ में आता है कि मेरा customer segment ऐसा है, इतने पैसे हैं उसके पास, यहाँ पे रहता है। जो साइकी आप कह रहे थे कि मार्केटिंग वाला प्रोफेशनल अलग है, कंसल्टिंग वाला अलग है, तो is there like 2-3 things, So 2-3 question that somebody should ask to understand psyche better? Yes. तो फॉर एग्जांपल, यू नो, I'll tell you by example कि मैं आपसे पूछता हूँ, ज्यादा लोग कई बोलते हैं कि आपका फेवरेट बिस्किट कौन सा है, या आप कौन सा खाते हैं जब आप घर पे बैठे होते हैं? वो गया, मैं पार्ले जी खाता हूँ। ठीक है, पहले फिर दिखाता हूँ, yes. ठीक है, फिर बोलते हैं कि अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको क्या खिलाते हो? वो हाइड एंड सीक बोलेगा, या क्रैक जैक, या मैरिको वगैरह, जो थोड़े से महंगे होंगे उससे, राइट? यू अंडरस्टैंड कि बंदा स्टेटस कॉन्शियस है, इसका माइंड ऐसे वर्क करता है। देन व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स, लेट्स से, मोबिलिटी, कि मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मैं 5 लाख रुपए की कार में चला जाऊंगा। क्योंकि आपको कई बंदे मिलेंगे कि सही नहीं, आई नीड टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट बिकॉज इट्स अ कंफर्ट, प्लेस ऑफ कंफर्ट फॉर मी, माई कार। तो मैं, अगर मेरे को ईएमआई भी लेनी पड़ेगी, मैं एक महंगी कार लेके जाऊंगा, भले मेरी सैलरी 10 लाख की है, मैं 10 लाख की कार लूंगा और मैं जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई यू कीप प्रोडिंग दिस क्वेश्चन, दैट यू नो, Got it. how do you, what is your outlook towards life, towards things which matter to you, right? Got it. And that's Got why it. you start to understand the psyche. And if you see the boom of all the fintech startup in India, it is based on one concept, that people want to live their life fully and they don't want to be constrained by the cash they have in hand. Got it. Got it. So So basically, this is a psyche we have. say if I'm able to understand properly, you're saying कि दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे जो मनी कॉन्शियस होंगे कि मुझे तो बस 50 रुपए ही खर्च करना है, जो भी इसमें मिलेगा मैं लूंगा, एंड देन देयर वैल्यू कॉन्शियस पीपल हु आर लाइक कि आई कैन stretch a little bit, go to 60 because I want like the best quality stuff which is possible in the market right now. Agree. And Got that's it. Got and it. you have to frame your questions in a way that, you know, you get to learn about these things. And Got every it. Got industry, every domain have their own way of defining these questions. Got it. Got it. Understood. So, again, maybe sort of dwelling on this marketing bit a little bit more. तो अभी गगन, आपने अर्ली स्टेज कंपनी में भी काम कर लिया, उसको थोड़ा ग्रो भी कर लिया, ग्रोथ स्टेज पे भी काम कर लिया, अभी प्रिस्टीन केयर में, विच इज अगेन ग्रोथ एंड लेट स्टेज के बीच में कहीं पे है। तो somebody, as an entrepreneur, somebody who's listening to this podcast, he or she would like to understand कि अर्ली स्टेज में मार्केटिंग कैसे करें, ग्रोथ स्टेज में मार्केटिंग कैसे करें, और लीड स्टेज में मार्केटिंग कैसे करें. सो इफ यू कैन talk a little bit about from your experience about these three stages, I think that will be great. So I think for the sake of simplicity, let's divide it in two parts, right? Mm-hmm. One is in the initial stages, which is clear. You have to work on three things, right? Mm-hmm. Context क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, और आप क्यूरियोसिटी क्या करने वाले हो, right? It has to be super sharp.
इन तीन में से दो चीजें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल. I can and I remember only one brand which has scaled really well despite focusing on only one axis, which is curiosity, is cred. लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी. राइट, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, Yeah. आके ट्राई करेंगे तब उनको शायद कॉन्टेक्स्ट और वैल्यू समझ आ जाए. बट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन दे फोकस ऑन क्यूरियोसिटी. राइट, एट फूड पांडा अगेन रिसोर्सेज कम होते थे और अवेयरनेस मैक्सिमम क्रिएट करना होता था. यू नीड द मैक्सिमम बैंग फॉर द बक. वी यूज्ड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यू. कि आपको खाना ऑर्डर करना है, आपको जल्दी चाहिए, मैं आपको पहले ऑर्डर पे 100 रुपए ऑफ दे दूंगा. सो वी यूज्ड टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ एक्सेस. राइट, तो ये बहुत क्लियर निकल जाता है. इनिशियल स्टेज पे आपके ना इन तीन में से दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. आपका ब्रांड प्रॉमिस सुपर शार्प होना चाहिए. इट कैन बी इनिशियल डिस्काउंट फॉर पेटीएम, इट हैज बीन कैशबैक्स बाय द वे. कॉन्टेक्स्ट क्या, आपको पेमेंट करना है बट आपको उस पेमेंट में कैशबैक मिल जाएगा, तो आपको वैल्यू क्रिएट होगी. क्यूरियोसिटी इतना करने का कुछ नहीं होता कि आपको पता चल गया प्रोसेस क्या, उन्होंने आपको कम्युनिकेशन में दिखा दिया कि ऐसे होगा. तो इनिशियल, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट कहता है आपको वैल्यू सिर्फ एक दिखानी कि कस्टमर के लिए वैल्यू कौन सी क्रिएट करती है. And this is what you have to index on supremely sharp. You will pick any example in any startup, for example, और आपको ये इन तीन एक्सिस में कोई एक एक्सिस सुपर शार्प होगा और कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर होगा. तो इस चीज पे इनिशियली बहुत हेल्प मिलता है. सिमिलरली जब आपको ट्रैक्शन मिलने लगता है, देन यू हैव टू फोकस ऑन कि जब ये स्केल करेगा ये हर रीजन में इक्वल हो. ऐसा नहीं है कि आपको बैंगलोर में अलग वैल्यू क्रिएट हो रही है, दिल्ली में अलग क्रिएट हो रही है, मुंबई में अलग क्रिएट हो रही है. इट हैज टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया. कहीं से भी ऑर्डर है, कुछ आए, दिस इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू गेट सेम थिंग ऑल अक्रॉस, यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस. सो इट इज द फंक्शन ऑफ द वैल्यू यू आर क्रिएटिंग एंड द एक्सपीरियंस यू आर गिविंग. एंड ऑल्दो थोड़ा लेट स्टेज पे आता है, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड अ फर्म टू वर्क ऑन द ब्रांड प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड एक्सपीरियंस प्रिंसिपल. कि मैं ये ब्रांड मेरा ये करता है, मैं आपको ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको ये चीज होगा. और तीसरा, जब आप मुझसे ये संभालोगे आपको ये एक्सपीरियंस फील होगा. ये चीजें बहुत क्लियरली निकल के आपको डिफाइन करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप मेरे यहाँ से आप लेट्स से आप प्रिस्टीन केयर आते हैं, आपको सर्जरी करानी है, आप सर्जरी के लिए आए, डॉक्टर से बात करी, आपको समझ आया, डॉक्टर ने कहा कि हमारी सर्जरी क्यों बेटर है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आपका जो इन एंड आउट होगा वो फास्ट होगा, आप यू कैन गो बैक टू वर्क वेरी क्लियर इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो वैल्यू बहुत क्लियर है. एंड हाउ डू यू इंश्योर कि वो एक्सपीरियंस उसका हॉस्पिटल में जाके भी इंटैक्ट रहे. सो ब्रांड, वो मेरी ब्रांड की एड देख के आया, मैंने उसे क्या कम्युनिकेट किया था, उसने अकॉर्डिंगली उससे बात करी, उसको जो एक्सपेक्टेड था, जो उसने देखा था, कम्युनिकेशन वही मिला, और उसका एक्सपीरियंस मेरे हॉस्पिटल में जाके क्या हुआ, वो सब चीजें यूनिफॉर्म है, जो उसको प्रॉमिस की गई वो वैसे मिलेंगे. आप ये तीन चीज करेंगे, स्केल बिकम इजियर टू हैव. देन आपका लेट स्टेज में आता है. अब जैसे प्रिस्टीन इज अ यूनिकॉर्न ऑलरेडी, राइट, वी आर रेवेन्यूज रन्स इनटू मल्टीपल 100 crores, राइट. सो वहां पे चीजें अब अलग होती हैं. मैंने मार्केट में वैल्यू एस्टेब्लिश कर रखी है, कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर रखा है. अब प्रिस्टीन केयर बंदा सुनता है हाँ ये हेल्थ केयर फर्म है, तो मेरे को कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कराने की जरूरत नहीं है. वैल्यू मेरी अगर विद टाइम चेंज हो रही है, आप इन एंड आउट करें जल्दी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी. अब आता है कि क्यूरियोसिटी पहले होती थी कि ये इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं. ठीक है, बंदा आया, चेक करता है, डॉक्टर समझ आया, डॉक्टर ने अच्छे से ओपीडी करी, समझाया कि सर्जन ने समझाया कि ऐसे होगा. अब उसको क्यूरियोसिटी उसको समझ आ गया कि हाँ ये ऐसे होता है. तो क्यूरियोसिटी इज नॉट द बिगेस्ट एंगल. अब आता है कि वी आर इनटू हेल्थ केयर. एट अ लेट स्टेज आई नीड टू फोकस ऑन ट्रस्ट. हाउ डू वी बिल्ड ट्रस्ट फॉर प्रिस्टीन केयर among our audiences? That's a key for us. For a late stage, the value has to be bigger and better than what you have been doing till now. For us, it has become now trust. That for healthcare, we understood of somebody who's sitting in Bangalore, Delhi, doing, let's say, a certain kind of job, they were inclined towards Pristyn. Now there are bigger set of audiences who we have not reached out to in the past. We want to attract them, but for them, biggest value lever is trust. Right? How do we build that? So you have to figure out early stage में आपकी वैल्यू क्रिएशन क्या है, मिडिल स्टेज में क्या है, और लेट स्टेज में क्या है. ब्रांड आपका जनरली 100 साल के लिए बनता है. वैल्यूज आपकी विद टाइम थोड़ी चेंज होती रहती है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप ऑर्डर किस ऑर्डर पर आप अपने आप को एलिवेट करते जा रहे हो. So you have to figure out these things, and that's how the scale happens. Got it. The early stage, you're saying both context and value has to be set, and then late stage, it's value that you have to be very careful about, because context is already there, but and you have to ensure that you are able to build trust through that right. value that you're delivering. Well, Got it.
Got it. Uh, a follow on sort of again on dwelling on marketing itself, right? So now this BKK Electronics, right? You were a part of BKK Electronics, IQOO and Vivo, right? BBK, there's nothing like BBK, by the Sorry, way. there's It's nothing Vivo. okay. There are a lot of many people say BBK, but all brands independent operately, there is nothing like BBK. Okay, Yeah. got it. Okay, no, because I think so. The question which I had was, is it like a brilliant marketing strategy in which they are basically launching one brand for a particular sort of audience, and then they launch another brand for a different kind of audience? Just curious about how they are sort of, what's the marketing and branding strategy behind all these Oppo and Vivo and IQOO and OnePlus? Like they sort of cater to different segments, right? I know that OnePlus phone is the same as Oppo, but I will go and buy an OnePlus. So क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? Like this is like brilliant the way they are doing it. Yeah. So तो आप again विवेक वो लोगों को BBK लगता है, वैसा कुछ नहीं है. Vivo and IQOO are part of the same brand or company, you can say. We are part of the same house. And Vivo competes with OnePlus, Oppo, and Realme. So OnePlus, Oppo, and Realme, they are a separate company and separate brands. Vivo doesn't talk to Oppo, and IQOO doesn't talk to, let's say, Realme. We have to compete with each other. So there's nothing like conglomerate or something which you're thinking. It's nothing like that. The way it is reported in the market or the publications. There's nothing like that. And when it comes to Vivo and IQOO, I'll tell you a very clear strategy. Vivo was extremely focused on camera audiences, people who are looking for photography, right? And they were looking at certain section of audience who are very interested in photography. Their income might be slightly lower than people who are using, let's say, iPhone and Samsung. Whereas IQOO was made for somebody who's looking for high-end gaming experience. So phone performance has to be really best in the category. So, and for these two, we realized that, over the period of time, the consumer audiences are really, really separate, and it should be marketed to them through separate brands. Yeah. So that's why I said, Vivo may not fit all the audience, and this is where brand power becomes weak for the peripheral audience. For those peripheral audience who are looking for gaming, IQOO was there. And that's how it was targeted. And technically, you can say that even IQOO and Vivo were competing with each other. The way OnePlus competes with Oppo also. तो वो चीज वहां से था. But you have to be clear about the audience. ठीक है, फाइनली समझ में आ गया, सब एक ही कंपनी नहीं है, अलग अलग है. They are competing with each other. IQOO एक साइड पे, Oppo, OnePlus, Realme एक साइड पे. Yeah. I think sort of dwelling on your current sort of Pristyn Care, current work that you're thing that you're working on, right? So healthcare is a tough sort of business, right? And building a trust in healthcare business is like quite tough. So how are you going about, because you are on this trust phase right now, right? So what are your sort of learnings and how are you going about building this trust? If you can sort of maybe on a macro way explain, if somebody is in a market which is where trust, let's say, is difficult to build, how do you do that? See, Vivek, if you see healthcare in India right now, I think we have done 0.01% of what we should have done till now. And अगर आप ऐसा लगता है कि मतलब healthcare should be very easy to start और मतलब बहुत ही जल्दी scale होना चाहिए, but we are just scratching the surface right now. Right. उसका एक इशू ये भी आता है कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे दिल्ली है, विद इन दिल्ली ऑल्सो आप एक्सपीरियंस करोगे साउथ दिल्ली में बेटर केयर मिल जाएगा वर्सेस नॉर्थ ईस्ट इन वेस्ट दिल्ली. राइट, सेम चीज बॉम्बे में होता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ बॉम्बे में शायद बेटर केयर मिल जाए एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ, राइट. एंड टियर 2 टियर 3 में तो हेल्थ केयर ऑलमोस्ट, एडवांस हेल्थ केयर तो नॉन एग्जिस्टेंट. आई एम श्योर छोटे मोटे हॉस्पिटल होंगे, ठीक हॉस्पिटल होंगे, बट एडवांस हेल्थ केयर ऑप्शन तो कम ही है, राइट. तो ये एक्सपीरियंस ना ब्रोकन है, राइट. अब मैं आपको एग्जांपल दूं, फूड डिलीवरी का था, द वे इट हैज स्केल्ड टिल नाउ. अब आपको फूड डिलीवरी एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म मिलेगा थ्रू आउट इंडिया, लेट्स से थ्रू स्विगी एंड जोमेटो. दे हैव टेकन इट टू दैट स्केल. दिस इज नॉट द केस विद हेल्थ केयर. टियर 2 टियर 3 के इश्यूज हैं, विद इन सिटी यूनिफॉर्म नहीं है एक्सपीरियंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी. एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, एंड इसका आंसर निकलता है हमें और हॉस्पिटल बनाना चाहिए, which is not the right way, because making a new hospital is a capital intensive business, right?
तो जबकि रियलिटी है कि 50% ऑफ द ऑपरेशन थिएटर इन इंडिया दे रिमेन दे आर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली. वो एम्प्टी होते हैं, खाली पड़े रहते हैं. तो आप और हॉस्पिटल बना के क्या करोगे, राइट? Wow. This is where Pristyn Care comes in. And okay, there's underutilized capacity that we can utilize. One, second, all those advanced consumable technology we will provide. We will upgrade the operation theater. We will reach out to the patient who are looking for advanced treatment, and our own doctors will ensure that they talk to the patient. They give the right advice also, because even current healthcare system uniformity or extensiveness of advice is also not clear. तो प्रिस्टीन केयर में पेशेंट आता है, उसके साथ आधे पौने घंटे की ओपीडी होती है, उसको पूरा समझाया जाता है कि आपका अगर आप ओपन सर्जरी कराओगे तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, या आपको वापस काम में जाने में टाइम लगेगा. अगर आप एडवांस कराओगे तो प्रॉब्लम विद इन 2-3 days you can get discharged and you can get back to work. And ultimately the kind of audience we cater to, this is the young population. And whether we realize it or not, people who are 30, 35, 40, they also suffer from diseases like piles and hernia and these things, but they can't leave their job for the treatment. एक Yeah. महीना घर पे छुट्टी लेके नहीं बैठ सकते हैं, right? So how do we ensure that we give them the advanced medical treatment? And this is where the value of Pristyn Care becomes very, very clear. That Got we it. are not going Got to it. invest in hospital. We are going to invest in current operation theater which are underutilized. Second, all of the surgeries will happen through most advanced technologies. उसके जो कंज्यूमेबल होंगे, कुछ इक्विपमेंट होंगे, वो हमारे सेंट्रल वेयर हाउस से जाएंगे और वहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे, सर्जिकल वापस आ जाएंगे, राइट? एंड दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस स्केल. फॉर द इनिशियल ऑडियंसेस, पीपल हु आर यंग suffering from these diseases and they want to get treatment done through non-invasive method, so we reached out to them, and that's how we have scaled till now. And as we have become, so this year we will complete our 5 years, and this is the second phase of our journey. We started. Now we have to extensively focus on building trust right from the brand communication process. It is not that Yeah. we have to establish that when the patient meets a doctor or talk to us, right from step one, it has to be trust-led, and this is what we have been working on now. Got it. So basically, you're saying space is already there. You're ensuring that there is the right equipment which is there, and you have the same doctors to give the same experience wherever your user is sort of ending up in, right? So I think these two things that you're trying to do is So uniform experience all throughout India. Very clear proposition. Yeah. Got it. Which doesn't happen, because you go somewhere, you'll find a very good doctor who's very genuinely giving you advice, and doesn't look like that he's just going to loot money. कि नहीं आप जबरदस्ती स्टेंट मत लगाओ, एंजियोप्लास्टी मत करो, बाईपास सर्जरी करा लो, and just because bypass surgery is more expensive than angioplasty. So got it, understood. See, healthcare has been a regional concept, if you would ask me. Yeah. Healthcare has been very, very regional. मेरे एरिया का ये हॉस्पिटल अच्छा है, मेरे एरिया का ये अच्छा है, इस एरिया में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं, आप उस एरिया में जाओ. So Pristyn is trying to solve this problem. तो कि हर जगह standardized facilities, standardized medical experience through a doctor, and standardized technology for all the treatments we do. Yeah, very, very important problem statement. Or more power to you, Gagan, to solve this. No, this has been amazing, Gagan. Thank you so much for walking through the entire entrepreneurial journey, the entire marketing insights. It has been lovely. Before we sort of close the session today, any recommendations, and any book recommendation, anything else that you want to add on? See, I think I've learned most from the people around me, but if you really are into books, then I'll recommend 2 books actually right now. One is 22 Immutable Laws of Branding. Yes, yeah. And second one is All Marketers Are Liars. So everything you heard on this podcast is a lie. Yeah, 22 Immutable Laws, I think, was my first book of marketing and branding. I think that was the first interest to marketing and branding. Both are there, marketing and branding, 22 laws. Yeah. Right. Cool. Thanks again. Thank you so much for your time. Has been a pleasure. Thank you. Hopefully Really we do more of such conversation in future. Done. Looking forward, man. Thank you. Thank you.